के इस वीडियो में हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के 180 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल इन NiCO4 इज। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है और इसकी हेल्प से जब हम निकालेंगे तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 36 हमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइज n-1 d सबसेल इन प्रेफरेंस टू। इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट, NP। थर्ड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ Fe। इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्राउंड स्टेट में Fe के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ Cu2Cl2 इज। इन दिस क्वेश्चन द राइट ऑप्शन इज डी, वाइट कलर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शोज हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, तो Fe3+, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट आयन इज डायमैग्नेटिक। इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट, Ni2+। Which of the following has unique electronic configuration? Option B is correct, Pd. And 8 number question है among the following ions which one has the highest paramagnetism? In this question option B is correct, FeH2O6 3 positive. 9 number question is the number of unpaired electrons in a complex compound is 2. The magnetic moment of the complex compound is, तो इसमें हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें दिए गए हैं और इसका हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है ये, इसके हेल्प से जब हम निकालेंगे तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, मतलब 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज़ द हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी इन सोल्यूशन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलर्ड इन सोल्यूशन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, V3 positive. Question number 12 is which of the following has the maximum number of unpaired d electrons. In this question option D is right, Fe3+। The number of unpaired electrons in Ni2 positive जिसका atomic number है 28, तो निकल 2 positive में 2 unpaired electrons होते हैं। So answer B is correct। Which of the following ions do not have colored solution? Zn2+, option D is correct। Magnetic moment of Mn2 positive complex will be, option D is correct। इसमें हिंट भी दी गई है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट ऑफ D, 3D, 4D एंड 5D फैमिलीज इन पीरियडिक टेबल आर कॉल्ड। उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, पर इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम नॉन ऑफ दिस पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 द कैटलिस्ट यूज्ड इज V2O5, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ K2Cr2O7 एंड NaCl विद कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 ऑरेंज रेड वेपर्स आर इवॉल्व्ड। These are of, option C is correct, CrO2Cl2। On passing SO2 in an acidified solution of K2Cr2O7 it turns green due to the formation of, option C is correct, chromic sulfate। Next question, in acidic medium when Fe2 positive react with K2Cr2O7 which of the following statement is correct? Option B is correct, when pyrolusite is diffused with KOH in the presence of air it gives K2MnO4, option B is correct। In acidic medium KMnO4 is reduced to Mn2 positive, option A is correct। Potassium ferrocyanide on heating with concentrated H2SO4 forms SO2, option C is correct। Prussian blue is potassium ferrocyanide, option C is correct। In the reaction between CuSO4 and Ki, a white precipitate is obtained due to formation of Cu2I2, option C is correct। When excess of NH4OH is added to the CuSO4 solution, deep blue color is obtained due to the formation of, option D is correct। SuSO4 solution react with excess of KCN to give, option B is correct। Rutile is an ore of, option A is correct, titanium। टिटेनियम का ओर होता है रूटाइल। विच मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। In this question option C is correct.
Van Arkel. Next question, carnotite is an ore of vanadium. Option B is correct. The outer configuration of chromium, जिसका atomic number 24 है, उसका outermost जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 3d5 4s1, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज़ एम्फोटेरिक. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. क्रोमाइट और इज़. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. Pyrolusite is an ore of manganese. Option B is correct. Chromite is an ore of. Option A is correct. Mond's process is used in purification of. Option C is correct. Nickel. Dimethyl glyoxime is used for the gravimetric estimation of. Option C is correct. The catalyst used in the hydrogenation of oils is. Option C is correct. Ore of the following metals form a volatile carbonyl compound and the property is used for the extraction of that metal. The metal is nickel. Option B is correct. The number of unpaired electrons in Fe3 positive, Z is equal to 226. Option B is correct. In first transition series, the divalent compound having maximum magnetic moment is of manganese. Option A is correct. Which of the following does not belongs to first transition series? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. सिल्वर जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट नहीं है. डी ब्लॉक एलिमेंट सो ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेचुरल रेडियो एक्टिविटी नहीं होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर. इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द मैग्नेटिक ऑक्सीडेशन हाईएस्ट oxidation state is exhibited by. Option B is correct. Manganese. Which of the following ion is not expected to be colored? Option D is correct. Cu positive. Which of the following is used as calibrant in magnetic measurement? Option C is correct. The expected magnetic moment of Ti3 positive ion is. इसका आंसर दिया गया है. Option C is correct. Which of the following is expected to have the highest magnetic moment? Option D is correct. Which of the following is expected to be diamagnetic? Option C is correct. ZnCl2. The first transition series elements from scandium to zinc. Option A is correct. The compound that is both paramagnetic and colored is. Option C is correct. The strength as oxidizing agent of the following species in acidic solution decreases in the order. Option C is correct. The magnetic moment of a transition metal ion is found to be 5.92 bm. Number of unpaired electrons present in it. Option D is correct. 5 unpaired electron होंगे तभी magnetic moment जो होगा वो 5.92 होगा. Option D is correct. 5. Identify the wrong statement regarding copper sulfate. Option B is correct. Chlorofilanic acid is tribasic. Option C is correct. TiCl4 fumes strongly in moist air and is hydrolyzed to give. Option D is correct. Which of the following exhibits highest oxidation state? Option D is correct. Which of the following ion is colorless in water? Option B is correct. In copper, Z इज इक्वल टू 29. इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो गलत हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नॉन ऑफ दीज होगा. कॉपरस आयन इज कलरलेस बट कॉपरिक आयन इज कलर्ड बिकॉज. ऑप्शन डी इज करेक्ट. लेकिन ऑप्शन डी में जो कॉपरस आयन हैज़ इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल लिखा हुआ है, इसकी जगह पे इनको हटा देना है. कंप्लीट अगर होगा तभी ये ऑप्शन जो है वो सही है, नहीं तो ये चारों ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं. अगर इनकम्प्लीट यहाँ पे होगा, यहाँ पे कंप्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए तभी ये ऑप्शन सही होगा. द पर्पल कलर ऑफ TiH2O 6 3 पॉजिटिव आयन इज ड्यू टू अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट. विच ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज इज एम्फोटेरिक. Option B is correct. Acidified solution of chromic acid on treatment with H2O2 gives blue color, which is due to. Option C is correct. In the dichromate diion. Option B is correct. Addition of high portions of manganese makes steel useful in making rails of railroads because manganese gives hardness to steel. Option A is correct.
In nitroprusside ion, the ion and NO exist as Fe2 NO positive rather than Fe3 and NO. These forms can be differentiated by option C is correct. Of the ions Zn2, Ni2 plus Cr3 plus on option A is correct. सिर्फ जिंक आयन जो होगा वो कलरलेस होगा और निकल क्रोमियम का जो आयन है वो कलर्ड होगा. N-1D 10NS2 is the general electronic configuration of option C is correct. Ammonium dichromate is used in fireworks. The green colored powder brown blown in the air is option B is correct. The first transition element is scandium. Option D is correct. Which of the following are transition element? D block element transition elements होते हैं. Then option C is correct. The number of unpaired electrons in Mn2 positive, option B is correct. 5 unpaired electrons होते हैं. The number of unpaired electrons in CO3 positive is 4. Option C is correct. Which of the following metals exhibits more than one oxidation state? Option C is correct. Manganese. Which of the following electronic configuration has maximum magnetic moment? Option A is correct. क्योंकि option A में 5 electrons हैं, 5 unpaired electrons होंगे तो इसका magnetic moment जो है वो ज़्यादा होगा. Next question है the maximum number of unpaired electrons is present in option D is correct. Which of the following is colored ion? Option B is correct. Which of the following has maximum magnetic moment? Option B is correct. Which of the following has highest atomic radii? Option D is correct. Which ion has highest paramagnetic character? Option A is correct. Which of the following has highest ionic radii? Option A is correct. Which of the following transition metal ion has maximum unpaired electrons? Option C is correct. Why the transition elements are often paramagnetic? Option C is correct. Why transition elements are colored? Option C is correct. Transition metal ion of high oxidation state are acidic. Option B is correct. Fischer salt is option A is correct. Series of activity of transition elements, option A is correct. Transition element has, option C is correct. Which ion among the following is yellow in color? Option A is correct. General electronic structure of transition element is option D is correct. Which ion is colored from following? Option A is correct. Which element of D block is the first member of series? Option A is correct. In following which ion is colorless? Option B is correct. Number of unpaired electrons in CO3 positive are, option C is correct. 4 unpaired electrons होते हैं. In the following which ion is paramagnetic? Option C is correct. The elements of which atomic number are present in first transition series? Option B is correct. 21 to 30. Number of unpaired electrons in Fe3 positive are, option C is correct. Which element has electronic configuration 3d5 4s1? Option C is correct. Which element shows more than one oxidation state? Option C is correct. In following which element has lowest density? Option A is correct. The aqueous solution of which salt is colored? Option C is correct. The transition element in following is, option C is correct. Nickel is a transition element. The element having atomic number 29 belongs to the block. Option C is correct. Which ion is paramagnetic from following? Option C is correct. The electronic configuration of Mn is Ar 3d5 4s. What will be its maximum oxidation state? Option C is correct. Maximum magnetic moment is shown by which electronic configuration? Option C is correct. In following which ion has maximum magnetic moment? Option D is correct. Transition elements show, option C is correct. The color of transition elements depend upon unpaired electrons. The option A is correct.